Hello everyone, welcome to biology therapy. I hope you all are doing good. तो जमती काली तुम मानकर फिजिक्स एग्जामिनेशन अच्छी सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रो जो माने भी प्लस टू सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम दौच काली फिजिक्स एग्जाम अच्छी जो माने साइंस पिला तो सेन पे आज गोटे सेशन मु नेकी आसी जोथि आमे फिजिक्स रो मोस्ट इंपोर्टेंट किछटा एमसीक्यू आमे प्रैक्टिस करियो मु किछटा सेट नेकी आसी पांच छटा सेट जिसेथि जहां भी एमसीक्यू अछि आमे वन बाय वन ताको डिस्कशन करियो तापूर्व तुम मैंने जदि फर्स्ट टाइम आम चैनल को विजिट कर निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर ता संगे संगे सांग पाखक शेयर भी कर और ये वीडियो को निश्चित भाव में लाइक कर जमी सब सांग पाखक पहुंची पार समस्त जमी एमसीक्यू वीडियो देखिए काली एग्जाम जमी ना बेनिफिट्स तो से हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट रही सेसन टा तो जो मैंने भी वीडियो को लाइक करना लाइक करनी आउ वीडियो को स्टार्ट करिया हाँ आउ जदि एई पीडीएफ तुमको दरकार कि जहाँ भी क्लासेस होची हम चैनल रे जदि पीडीएफ दरकार तुम माने बायोलॉजी थेरापी गोटे टेलीग्राम चैनल अच्छी से बायोलॉजी थेरापी कैपिटल रे सर्च करिवो गोटे चैनल ही आसीबो सेइथिरे तमे जाईकी आराम से जॉइन करि परियो फ्री ऑफ कॉस्ट सब पीडीएफ हे गला किंबा जहाँ भी क्लासेस होची सब किछि तमे एक्सेस करि परियो आ जदि किछि क्वेरी अछि त मते व्हाट्सएप नंबर रे मैसेज करि परियो 8598062969 ए नंबर रे मते मैसेज करि परियो अदरवाइज कोन कमेंट सेक्शन रे भी जणे परियो वीडियो केमति लागिला नेक्स्ट कोन हमें डिस्कशन करिवा तो चलो ठीक अछि स्टार्ट करियो वीडियो को आउ जो माने भी जदि देखिनो तुम माने सिलेक्टिव जदि देखिनो मु तुम 2 मार्क्स रो आउ 3 मार्क्स रो सिलेक्शन भी देछि ता संगे संगे लॉन्ग क्वेश्चन रो भी फिजिक्स रो सिलेक्शन देथिली जदि देखिनो देखो ऊपर आई बटन भी आस्तबो नहले ए वीडियो रो एंड रे तुम माने से वीडियो सब तुम माने शो करे दबो तो जाई कि आराम से देखि नबो जो माने देखिनो तो स्टार्ट करिया चलो फर्स्ट देखो कोन छी ए नंबर देखो SI unit of capacitance is SI unit of capacitance is SI unit कोन कैपेसिटेंस देछि कि ऑप्शन में देखो हेनरी टेस्ला वेबर ये सब नुह तो नन ऑफ दिस वाला आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बी क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो ए कंडक्टर इज नोन एज कौन कहला द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो ए कंडक्टर इज नोन एज जदि कंडक्टर थ्रो रे जदि वेलोसिटी देखु इलेक्ट्रॉन त कौन कहबो ऑप्शन में देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी नन ऑफ दिस जदि देखिबो ताहले पाखरे कोन छी आंसर वाला तुम मानकर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी जदि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रो ए कंडक्टर जदि देखु ताकू हम कोन कहबा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी नंबर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश ए पाखरे कोन पचारची तुम मानकू किरचॉफ्स लॉ सॉरी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ओबे द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश से कहार कंजर्वेशन किरचॉफ्स वेलोसिटी लॉ तुम मानकू पचारची ऑप्शन देखिए फर्स्ट में अछि देखो एनर्जी अछि सेकंड अछि चार्ज अछि थर्ड अछि मास और फोर्थ अछि पावर तो तुम जदि देखियो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को प्रिंसिपल को कंजर्वेशन करर माने सेटा होची एनर्जी को हे गला क्लियर नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट डी नंबर देखो चलो इन photoelectric effect the incident light are act as से कहला तो photoelectric effect the incident light act as केमती काम करे बोल से बारे पचारछि ऑप्शन देखो कौन कौन अछि फर्स्ट अछि फोनोन सेकंड ऑप्शन अछि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑप्शन अछि प्रोटॉन आउ फोर्थ ऑप्शन अछि कोन फोटॉन तो जदि देखियो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द इंसिडेंट लाइट एक्ट एज केमती फोटोन हिसाब रे काम करे नेक्स्ट जीवा ई नंबर को जीवा electromagnetic waves are dash in nature से पचारला electromagnetic wave टा नेचर रे को भलिया फर्स्ट ऑप्शन देखो लॉन्गिट्यूडिनल सेकंड अछि कोन ट्रांसवर्स थर्ड रे अछि कोन प्लेन और फोर्थ रे अछि नॉन ऑफ दिस जदि देखियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर से माने ट्रांसवर्स नेचर रे थांती क्लियर नेक्स्ट जीवा एफ नंबर को जीवा द मेजॉरिटी कैरियर इन p टाइप सेमीकंडक्टर से पचारला p टाइप सेमीकंडक्टर रे मेजॉरिटी ऑफ कैरियर को भलिया फर्स्ट अछि न्यूट्रॉन सेकंड अछि इलेक्ट्रॉन थर्ड अछि होल्स और फोर्थ अछि नॉन ऑफ दिस जदि देखियो मेजॉरिटी ऑफ कैरियर केमती थांती p टाइप सेमीकंडक्टर रे ताले होल्स कथा से कहउची नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जी नंबर देखो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज हम कहला द एसआई यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज कोन हबो फर्स्ट देखि देखो ईवी सेकंड देखि ईआरजी थर्ड देखि वाट और फोर्थ देखि नॉन ऑफ दिस ताले देखिबा एसआई यूनिट ऑफ वर्क जदि ताले एनर्जी वेलोसिटी क्लियर नेक्स्ट जीवा एच रे पहुंची ए चार्ज q is placed at the center of the line joining two charges q and q so the equilibrium of the system of these charges will be कौन कहला the charge q is placed at the center of the line joining two charges q and q
so the equilibrium of system of three charges will be से पचारला तीनटा चार्जेस रो इक्विलिब्रियम कोन आसीबल से बारे तम मानू पचारछि ऑप्शन ने कोन दे देखो फर्स्ट ऑप्शन प्लस q/3 सेकंड है माइनस q/3 थर्ड देछि प्लस q/4 फोर्थ देछि माइनस q/4 ताले जदि देखिबो ताले पाखरे कोन हबो माइनस q/3 हे जिवो सॉरी माइनस q/4 हे जिवो माइनस q/4 हे जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवो 1 वोल्ट इक्वल टू डैश स्टेट वोल्ट देछि যদি ଦେଖିବ 1 ভোল্ট ইকুয়াল টু ড্যাশ 8 ভোল্ট ଦେଇଛି ପାଖରେ ଦେଖ 3 ଦେଇଛି 10 to the 3 10 to the 8 10 to the 9 ଦେଇଛି ତାହେଲେ এই ସବୁ କୌଣସି ବି ନୁହଁ ତାହେଲେ ଅପସନ କଣ ହେଇଯିବ 4 ହେଇଯିବ ନନ୍ ଅଫ ଦି ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯିବା I now देखो a charge q is moving through a magnetic field of strength b with velocity v then the force experienced by the charge is कौन ଦେଇଛି ऑप्शन देखो फर्स्ट देखो f equal to q ब्रैकेट देछि v into b रो तमनारो कोन वेक्टर देछि हला सेकंड देछि f equal to q ब्रैकेट रे v into b देछि v dot b देछि हला थर्ड देछि त कोन देछि तम मानकर f q equals to v by b देछि तो ए बगरे कोन हिजो फर्स्ट ऑप्शन हिजो तम मानकर करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा के SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कौन पचारला SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कौन देछि फर्स्ट देखो n by a dot second तापर सेकंड देछि a by n dot second थर्ड देछि n dot second by a फोर्थ देछि a dot second by n ताले हिजो कोन तम मानकर n by a dot second हिजो तापर l नंबर देखो कोन अछि l नंबर कोन अछि देखो a current carrying conductor act as a current carrying conductor अच्छा एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज केमती काम करे फर्स्ट अछि देखो मैग्नेटिक डाइपोल सेकंड अछि इलेक्ट्रिक डाइपोल थर्ड अछि कोन इंडक्टर फोर्थ अछि नॉन ऑफ दिस ताल देखिबो एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक्ट एज केमती काम करे मैग्नेटिक डाइपोल हिसाब रे काम करे नेक्स्ट बुझिबा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोन कहला मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज मैग्नेटिक मोमेंट रो पर यूनिट वॉल्यूम कोन जानियो तुम माने जदि देखियो फर्स्ट अछि कोन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड अछि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट थर्ड अछि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फोर्थ अछि कोन नॉन ऑफ दिस ताल जदि देखियो कोन हबो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हे जिवो n नंबर को जिवा n नंबर कोन अछि देखो द EMF induced in a 10H inductor in which current changes from 11A to 2A in 2 into 10 to the minus 1 second कौन हो ताहले आंसर कोन हो देखो n नंबर आंसर कोन हो देखो तम मानकर 10 to the 2 वोल्ट हो क्लियर नेक्स्ट बुझिबा the electromagnetic induction obeys the dash law कौन कहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन obeys the dash law को लॉ को से फॉलो करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लॉ को तुमको फॉलो करल से पगरे पचारछि ताल तुम जानितो एटा फैराडेज लॉ को फॉलो करे तापर देछि कोन देखो पी नंबर द SI यूनिट ऑफ लेंस पावर इज द SI यूनिट ऑफ लेंस पावर इज कोन डायोप्टर नेक्स्ट क्यू नंबर को जिवा रदरफोर्ड इन्वेस्टिगेटेड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बाय bombarding foil with कौन कहला रदरफोर्ड इन्वेस्टिगेटेड न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बाय bombarding foil with कहा संगरे अल्फा रे संगरे से बॉम्बार्ड करथिले नेक्स्ट आर नंबर जिवा which mirror is used in automobiles रे को मिरर टा को यूज कर जाय से पचारछि ताहले को मिरर को यूज करा जाय कन्वेक्स मिरर को यूज करा जाय नेक्स्ट एस नंबर देखो ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट नंबर 2 इज नोन एज डैश सीरीज ताहले ताको बाल्मर सीरीज बोली कहै छै जदी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को नंबर 2 जाउछि ताहले ताको बाल्मर सीरीज बोली कहै छै नेक्स्ट देखो टी नंबर देखो minimum energy required to ionize an atom is known as dash energy जदी minimum energy दरकार होची आयोनाइज करे गोटे एटम को ताहले ता कोन कहै जो आयोनाइजेशन बोली कहै छै गोटे सेट सरला नेक्स्ट सेट को जिवा नेक्स्ट सेट को जिवा फर्स्ट क्वेश्चन देखियो फर्स्ट क्वेश्चन देखो two charges -5c and the and plus 5c are placed 10 cm apart
potential at the center of the line joining the two charges is दीटा लाइन को जॉइन करिया को जो चार्जेस दरकार सेटा केति हेबल सेही पाखरे पचार दी ताहले 0 हो जिवो नेक्स्ट देखो बी नंबर देखो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय अच्छा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय केमति हेबो E equals to 1 by 2 रो CV square होगा E equals to 1 by 2 रो CV square है जो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the work function for a metal surface is 4.14 eV the threshold wavelength for this metal is केते हो ताहले 3000 angstrom है जो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा an object has charge of 1 C and gains 5 into 10 to the power 18 electrons then the net charge on the object becomes केते हेजो 0.20 C हेजो 0.20 C हेजो नेक्स्ट आसीबो इन नंबर SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोन हेजो SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जदि देखियो ताले हेनरी तापर नेक्स्ट F नंबर जो व्हाट इज द RI ऑफ मीडियम if velocity of light in an material medium is 2 into 10 to the power 8 m meter per second ताहले केते आसी वाली पाखे से पचारची जो देखियो कोन पचारला उतरे देखो द सॉरी व्हाट इज द RI of the medium if velocity of light in a material medium is 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power 8 meter per second ताहले कोन आसीबो देखो ए बागरे 1.5 आसीबो नेक्स्ट जीवा जी नंबर को जीवा हाइगेन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन कोटा को एक्सप्लेन करि पारे ना हाइगेन्स वेव थ्योरी कोटा को इंटरफेरेंस को से एक्सप्लेन करि पारे ना नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एच नंबर जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मिनिमम कहारो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ता मिनिमम हो तळे किछि तम मानको ऑप्शन देछि ताले देखो कोन कोन हबो रेडियो वेव देछि माइक्रोवेव देछि इंफ्रारेड वेव देछि आउटी यूवी रेड देछि सॉरी यूवी वेव देछि ताले यूवी वेव रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ता मिनिमम थे नेक्स्ट जीवा आई नंबर को जीवा द constituent particles of a nucleus is known as कोन एटम मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियॉन्स नन ऑफ दिस ताले न्यूक्लियस रो constituent particles को न्यूक्लियॉन्स बोली कहै नेक्स्ट जीवा जे नंबर कोन से देखो diagrammatic substances are dashed by the magnet diamagnetic substance are dashed by magnet केमती हो diamagnetic substance केमती हो magnet को रिपेल करिवो नेक्स्ट नंबर को जीवा के नंबर the phase difference between alternating EMF and the current is purely inductive circuit is कोन आसीबो अल्फा बाय 2 आसीबो नेक्स्ट एल नंबर को जीवा the wave relevant to telecommunication is जो वेव टा टेलीकम्युनिकेशन संग रिलेवेंट है ताको माइक्रोवेव बोली कह जाय नेक्स्ट एम नंबर को जीवा एम नंबर को छै देखो द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm इन diopter unit is केते आसीयो 5 आसीयो तबर नेक्स्ट जीवा the ground state energy of an electron is the ground state energy of an electron in hydrogen atom कोन कहला n नंबर कोन कहछि the ground state energy of the electron in hydrogen atom is केते आसीबल से पचारछि ताहले -13.6 eV आसीबो नेक्स्ट ओ नंबर देखो कोन आछि the relation between nuclear radius r and the nuclear mass number a of a nucleus is कोन आसीबो सेटा ताहले देखो तुम मनकर r equals to r not a to the power 1 by 3 एटा 1 by 3 अछि है नेक्स्ट जीवा p नंबर कौन दीजिए देखो acceptor level in a p type semiconductor is nearer to dash band कौन कहला acceptor level of a p type semiconductor is nearer to dash band ताहले कोन आसीबो को बैंड को नियर होई कि आसीबो ताहले वैलेंस बैंड को से नियर होई कि आसीबो नेक्स्ट अछि क्यू नंबर देखो the frequency of light wave of a wavelength 600 nm is केते आसीबो ताहले 6 केते आसीबो एटा 0.5 into 10 to the power 15 हर्ट्ज आसीबो नेक्स्ट देखो आर नंबर देखो a voltmeter of range 2 volt and the resistance 3000 cannot be converted to an
ए मीटर ऑफ रेंज को मीटर को कन्वर्टेड हो परियो से पाखे तुम मानू पचार ताहले कोन 5 MA मिली एम्पियर। नेक्स्ट देखो एस नंबर एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट एनर्जी गेन बाय इट इन इलेक्ट्रिक वोल्ट इज डैश कोन आसीबो ताहले सेटा यदि 200 वोल्ट अछि ताहले 200 इवी आसीबो। नेक्स्ट आसला 3 नंबर कोन से देखो कि गॉस लॉ इज वैलिड फॉर डैश सरफेस क्लोज्ड सरफेस में गॉस लॉ वैलिड थे। क्लियर। नेक्स्ट सेट को जीवा ठीक अछि। नेक्स्ट सेट देखो देखो जो माने वीडियो को लाइक करना है जाए वीडियो को लाइक करो निज संग मान पाखु शेयर करो। क्लियर। तो देखो कौन सी फर्स्ट ऑप्शन देखो फर्स्ट नंबर देखो if a semiconductor is doped with acceptor impurity then dash concentration increases whole concentration increases। नेक्स्ट कौन सी देखो बी नंबर कौन देखिए देखो the work function of a metal is 2.8 ev then threshold wavelength will be केते आसीबो 4433 एंगस्ट्रॉम आसीबो। नेक्स्ट देखो सी नंबर देखो कौन सी the dual nature of light is shown by first अछि refraction सेकंड अछि कोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थर्ड अछि बोथ आई एंड 2 ताहले बोथ आई एंड 2 हे जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो डी नंबर देखो डी नंबर कौन दिछि the ratio of minimum to maximum wavelength in Balmer series रे minimum to maximum wavelength केते आसीबो तुम मानकर 5:9 आसीबो। क्लियर। नेक्स्ट असला कोन देखो ई नंबर the diameter of the first orbit of hydrogen atom is 1 angstrom आसीबो। नेक्स्ट नंबर देखो एफ नंबर कौन सी एफ नंबर अछि तुम मानकर कोन the minimum distance between an object and its real image formed by a convex lens of focal length f is केते आसीबो फोकल लेंथ से पचार छी बाकी कौन से तुम मानकर 4f आसीबो। नेक्स्ट नंबर जी नंबर को जीवा जी नंबर जीवा कौन से देखो the length of an astronomical telescope for normal vision the length of an astronomical telescope for a normal vision पे को आसीबो f naught plus fe आसीबो। नेक्स्ट एच नंबर देखो the locus of the particles of the medium vibrating in the same phase is known as कौन आसीबो ताकू wave front बोली कहजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा नेक्स्ट नंबर देखो आई नंबर अछि energy of electromagnetic wave is due to their कौन आसीबो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो बीटा हिसाब रे आसीबो तो बोथ 1 and 2 आसीबो। नेक्स्ट देखो जे नंबर कौन अछि the rms value of an alternative current is I equals to I naught cos omega t is केते आसीबो 0.707 im आसीबो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो के the SI unit of magnetic flux is कौन सा के नंबर देखो the SI unit of magnetic flux कथा से पचला ताहले वेबर आसीबो। नेक्स्ट देखो L नंबर देखो a galvanometer can be converted into an voltmeter by connecting a high resistance in कोथि कनेक्ट करियो पड़ियो जदी गोटे galvanometer को तुम जदी कन्वर्ट करियो voltmeter को ताहले कोन सीरीज रे कनेक्ट करियो पड़ियो। नेक्स्ट देखो M नंबर the magnetic field intensity at any point near a long straight conductor is कौन कहला the magnetic field intensity at any point near a long straight conductor is कौन आसीबो सेटा ताहले देखो हम मानकर ए बारे किछटा ऑप्शन देछि जोथरे कोन mu naught I by 2 pi r आसीबो। क्लियर। नेक्स्ट n नंबर देखो 1 टेस्ला इक्वल टू डैश गॉस देछि गोटे टेस्ला को केते गॉस हो तुम मानकर ताहले 10 to the power 4 गॉस हो। नेक्स्ट नंबर देखो two cells each of EMF 1.5 volt are connected across point A and B the effective PD between A and B is कौन आसीबो ताहले देखो ए पाखरे 1.5 वोल्ट आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पी नंबर देखो कौन सी if increasing the temperature the specific resistance of a conductor will be कौन हो सेटा भी इंक्रीज करिवो।
नेक्स्ट देखो क्यू नंबर द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी कौन हबो एम इनवर्स 2 टू द पावर इनवर्स 2 नेक्स्ट आर देखो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज कौन आसीबो सी स्क्वायर बाय एन एम रो स्क्वायर नेक्स्ट देखो एस नंबर देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन infinitely infinitely long state where is proportional to कौन आसीबो कथा 1 by r आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर देखो a proton and electron are at a distance of 1 angstrom कौन कहला a proton and electron are at a distance of 1 angstrom the dipole moment of the dipole is कौन आसीबो ताहले t रो जदि देखिबो ताहले 1.6 into 10 to the minus 29 cm आसीबो 1.6 into minus 29 cm आसीबो क्लियर नेक्स्ट स्टेप को जीवा देखो हम तीनटा सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर सारलेनी जो माने वीडियो देखुछो तो निश्चित भाव वीडियो को लाइक करो जदि लाइक करना निज सांग मान पाखु शेयर करो आ जदि हम चैनल को फर्स्ट टाइम पे विजिट करते ताले निश्चित भाव सब्सक्राइब करना चैनल को आ टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करना टेलीग्राम चैनल त मन को ई वीडियो डिस्क्रिप्शन रे भी मिल जिवो लिंक मिल जिवो से लिंक रे जाई कि जॉइन करो फ्री ऑफ कॉस्ट तमे सब कोन पीडीएफ पाई परिबो जीवा नेक्स्ट स्टेप जीवा फर्स्ट नंबर को जीवा फर्स्ट नंबर देखो कोन छी an electric dipole placed in a non-uniform electric field will be experienced only कौन एक्सपीरियंस करि परिबो जदि गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम जदि प्लेस करियो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे ताले से टॉर्क को एक्सपीरियंस करियो क्लियर नेक्स्ट जीवा बी नंबर द सॉरी कौन देछि द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इंफिनिटी नेक्स्ट सी नंबर को जीवा सी नंबर को अछि capacitance of spherical conductor with radius 1 meter is केते आसीबो 1.1 into 10 to the minus 10 farad नेक्स्ट क्वेश्चन बुझियो डी नंबर देखो डी नंबर कोन अछि द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो एसआई यूनिट तमन को चर्चित ताले कोन हो ओम पर सीएम स्क्वायर ओम पर सीएम स्क्वायर नेक्स्ट देखो ई नंबर देखो which law describe the relation between PD and electric current between two points in a conductor ताले ohms law सेटा को कोन कर describe कर f नंबर जिवा f नंबर को अछि 0.4 mA current is flowing through a resistor due to 6 volt battery find the resistance find करियो अछि केते आसीयो 15 किलोवाट आसीयो नेक्स्ट देखो g नंबर देखो the ratio of voltage sensitivity Vs and the current sensitivity Is of a moving coil galvanometer केते आसीयो 1 by G आसीयो H नंबर देखो which of the following is SI unit of Newton meter per ampere हम कहला न्यूटन मीटर पर एम्पियर रो तमन कोटा तळे गोटे तमन SI यूनिट बोली से पछाडी ताले मैग्नेटिक फ्लक्स हियो नेक्स्ट देखो I नंबर in an alternate circuit the current leads voltage by pi by 2 the current is कोन आसीयो तो करंट कोन आसीयो फुल्ली वाटफुल आसीयो नेक्स्ट देखो जे नंबर को जिवा जे नंबर कोन सी देखो when a charged particle enter a uniform magnetic field then its ke कोन आसीयो ke remains constant रहियो नेक्स्ट के नंबर देखो Faraday's law obey the principle of conservation of Faraday's law कोटा माने तुम माने को प्रिंसिपल को ओबे करिवो Faraday's law obeys the principle of conservation of कोन एनर्जी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर छथि एटा नेक्स्ट एल नंबर देखो एल नंबर कोन छी देखो द एसआई यूनिट ऑफ आरसी इज आरसी रो एसआई यूनिट कोन सेकंड नेक्स्ट एम नंबर को जिवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द लीस्ट वेवलेंथ कोटा लीस्ट वेवलेंथ आसी ओली पते तुम मन को चर्चित जानि जे तुम माने गामा रे नेक्स्ट देखो एन नंबर जिवा एन नंबर कोन छी two thin biconvex lens of a focal length 30 cm and 60 cm are kept in contact in air medium find the power of combination कोन आसीयो ताहले सेटा 5d आसीयो नेक्स्ट जो ओ नंबर कोन दिजि the astronomical telescope has two lenses of powers 0.5d and 0.5d and 20d its magnifying power will be केते आसीयो magnifying power केते आसीयो
40 आसीबो। नेक्स्ट देखो पी नंबर कोन देखि डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट कोन m l स्क्वायर t इनवर्स 1 ठीक अछि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर जीवा क्यू नंबर क्यू नंबर कोन अछि देखो the de Broglie's wavelength of electron is 10 angstrom then its velocity will be যদি de Broglie's wavelength electron যদি 10 angstrom हैला ताहले velocity कोन आसीबे पाखरे से पचारछि कोन अछि देखो पाखरे 7.2 into 10 to the power 5 meter per second आसीबे क्लियर। नेक्स्ट जीवा आर नंबर को the orbital angular moment of an electron in the third Bohr's orbit is केते आसीबो आसीबो तम मानर कोन 3h by 2 pi। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एस नंबर देखो the number of spectral lines in hydrogen atom is केतेटा स्पेक्ट्रल लाइन आसीबो हाइड्रोजन एटम रे इनफिनिटी आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the process of adding impurities to the intrinsic semiconductor is known as कोन होबो ताको कोन कहै छै डोपिंग बोली कहै छै। नेक्स्ट सेट को जा 5 नंबर सेट को जा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए डैश क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट नंबर देखो बी नंबर देखो फोर कैपेसिटर each of capacitance 0.5 mu f are connected in parallel the resultant capacitance of the combination is केते आसीबो ताले सेटा 2 mu c आसीबो 2 mu c आसीबो। नेक्स्ट देखो सी नंबर कोन सी इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज केते आसीबो 0। नेक्स्ट जीवा डी नंबर को जीवा बी नंबर देखो three identical 3-volt batteries are connected in parallel 3-volt batteries are connected in parallel the emf of combination is ଦେଇଛି 0.002 angstrom 2 angstrom 0.02 angstrom କୋ टाइप होने नन ऑफ दिस ହେଇଯିବ। नेक्स्ट देखो ई नंबर देखो the temperature coefficient of resistance is nearly 0 for कहा में पाखापाखि 0 हबो यदि टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखिबो रेजिस्टेंस टा कहारो पाखापाखि 0 आसीबो ताले आसीबो मैग्नानिन पे। नेक्स्ट देखो एफ नंबर कोन अछि कि magnetic field intensity at the center of coil of 50 tons radius 50 cm and the carrying a current of 2 angstrom is केते आसीबो एटा 1.25 into 10 to the minus 4 t आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी नंबर a coil carrying electric current is placed in uniform magnetic field then dash is produced कौन प्रोड्यूस हो टॉप प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट देखो एच नंबर इन एसआई यूनिट वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज केते आसीबो देखियो बेकरी 4 पाई into 10 to the minus 7 n square आसीबो। नेक्स्ट देखो which material have negative susceptibility को मटेरियल टा तमरो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी आसीबो ताले डायमैग्नेटिक टा आसीबो। नेक्स्ट देखो जे नंबर देखो एन इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन इट्स गोटे इंडक्टर कोउथरे तार स्टोर माने एनर्जी को स्टोर करिवो जे नंबर जदी देखिबो ताले कोन मैग्नेटिक फील्ड ताको स्टोर करिवो। के नंबर देखो फॉर एन अल्टरनेटिव करंट I equals to I naught sin omega t the RMS value of current is केते आसीबो I naught by 2 ର root over। नेक्स्ट नंबर देखो L which of the following is an electromagnetic waves तळर कोटा टे तम मानकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कथा से ए बागरे पचारची ताहले एक्स रे कथा हेगला। एम नंबर देखो एम नंबर कोन देछि कि डेजलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू जो डायमंड रो डेजलिंग करे सेटा कहा पई हेथे वाली बागरे तम मान पचारची इंटरफेरेंस की डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन किछि भी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट देखो एन नंबर को जियो the critical angle of a glass slab is 30 degree
द RI of the material of the slab is केते आसीबो पाखरे तम मानकर 2 आसीबो। नेक्स्ट in YDSE for which color the fringe width is least को कलर टा लिस्ट अछि बोले पाखरे से पचार जी तम मानबो ताले ग्रीन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द E by M value of electron is E by M value केते आसीबो पाखरे 1.76 into 10 to the 11 C per kg। नेक्स्ट देखो Q नंबर कौन अछि, the work function of a potassium is 2 electric volt, then threshold wavelength is केते आसीबो ए बागर आसीबो 620 नानोमीटर आसीबो। 620 दी थ्री देजी देखो है। नेक्स्ट जीवा आर नंबर जीवा देखो, the minimum excitation potential of Bohr's first orbit in hydrogen atom is कौन आसीबो 10.2 वोल्ट आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एस नंबर, रिलेशन बिटवीन ट्रांजिस्टर पैरामीटर अल्फा एंड बीटा इज कौन आसीबो अल्फा बीटा भितरे बीटा इक्वल्स टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट देखो टी नंबर, द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द जर्मेनियम क्रिस्टल इज कौन आसीबो कोवेलेंट आसीबो। क्लियर, लास्ट आसीगला एटा लास्ट डिस्कशन कर देबा जहां भी अछि। तो जो माने भी जे वीडियो को लाइक करनो निश्चित भाबरे लाइक करनियो, निज सामना पाखो ये वीडियो को शेयर करो आ हम चैनल ले फर्स्ट टाइम जदी विजिट करछो ताहले सब्सक्राइब करनियो चैनल को। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखियो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो कौन अछि, फर्स्ट क्वेश्चन अछि न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कहा प्रिंसिपल ले काम करे न्यूक्लियर फिजन बेसिस रे काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, ऑल न्यूक्लियाई कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रॉन बोथ आई एंड बी नन ऑफ दिस, तो हाइड्रोजन भी न्यूट्रॉन भी कंसिस्ट करे। नेक्स्ट देखो सी नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट पे एसआई यूनिट कोन ताहले जूल पर सेकंड। नेक्स्ट देखो डी नंबर, द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर पे एफिशिएंसी कोन 41.2 80.9 90.3 नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ई नंबर जीवा, the ratio of maximum to minimum wavelength is in bracket series of hydrogen atom is केते आसीबो हाइड्रोजन एटम पे 25/9 आसीबो। नेक्स्ट देखो एफ नंबर, rectilinear propagation of light is due to its कोन आसीबो कहा पई आसीबो तो वेव नेचर पे आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा जी नंबर देखो, the nature of wave form from a point source is dash in nature, ताहले spherical in nature। नेक्स्ट एच नंबर देखो, the astronomical telescope has two lenses of powers that is 0.5D and 20D, its magnifying power will be केते आसीबो 40 आसीबो, एटा हम ऑलरेडी डिस्कशन करि सारथिले। नेक्स्ट देखो आई नंबर, the dimension of E vector by B vector is equal to which physical quantity, को physical quantity पई एटा समान हो velocity पई। नेक्स्ट देखो जे नंबर देखो कौन अछि कि the EMF E equals to 210 sin 314t frequency is 100 हर्ट्ज अछि 211 हर्ट्ज अछि 314 हर्ट्ज अछि कोटा होबनी नन ऑफ दिस हो। के नंबर देखो, SI यूनिट ऑफ सेमी इंडक्टेंस इज SI यूनिट रो सेमी इंडक्टेंस कोटा आसीबो वेबर अछि टेस्ला अछि फैराड अछि कोटा बिना नन ऑफ दिस आसीबो। नेक्स्ट एल नंबर देखो, which of the following has low resistance कोटा लो रेजिस्टेंस आसीबो फॉलोइंग कोटा लो रेजिस्टेंस अछि ओइ पाखरे तम मानकु एमीटर वोल्टमीटर बोथ 1 and 2 गैल्वानोमीटर ताहले एमीटर रो लो रेजिस्टेंस आसीबो। नेक्स्ट देखो एम नंबर, work done on the charge particle by the magnetic force is work done on the charge particle by the magnetic force is कोन आसीबो जदि देखिबो ए पाखरे ताहले 0 आसीबो। नेक्स्ट होची एन नंबर जीवा, एन नंबर कोन अछि तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू ए पाखरे देखि त मानकु x इक्वल टू 1/h आसीबो। नेक्स्ट जीवा ओ नंबर, लॉरेंस फोर्स इज गिवन बाय कोन आसीबो ओ नंबर जदि देखिबो ताहले देछि F equal to Q V by V into V ए सब देछि तो नन ऑफ दी रहेगा। नेक्स्ट देखो पी नंबर, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कोन आसीबो तम मानकर जदि देखिबो ताहले टेस्ला आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्यू नंबर देखो, which quantity measure the strength of an electric field ताहले कोन आसीबो क्यू नंबर जदि देखिबो ताहले
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आसीबो कोन आसीबो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आसीबो आर नंबर देखो एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज आर नंबर एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ इज ताले आसीबो कोन वोल्ट एस नंबर देखो force between two charges q1 and q2 separated by distance r is 25 n if it is reduced to 5 n then the distance separation will be कोट आसीबो distance केते सेपरेट हो 5 रो रूट ओवर r आसीबो नेक्स्ट देखो टी नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन टी नंबर कोन सी द चार्ज इन इंडिपेंडेंट सॉरी चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स चार्ज टा तारो कहा संगे इंडिपेंडेंट थाए वेलोसिटी संगे इंडिपेंडेंट थाए आई होप तुम मानन कोई जहां भी एमसीक्यू में डिस्कशन कले काली फिजिक्स एग्जाम रे तुम मानन पई बहुत इंपोर्टेंट माने तुम मानन पई किसी न किसी हेल्पफुल रहइबो सो जो माने भी एंड जे वीडियो को देखिबो देखि जो सोने जदी पीडीएफ पाया चाहो ताले टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल जानि समस्त बायोलॉजी थेरेपी गोटे ही चैनल अछि जॉइन हो जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट सब पीडीएफ पाइबो और जदी वीडियो को लाइक करना ताले लाइक करनियो और निज संगन पाख भी शेयर करनियो और हम चैनल को जदी फर्स्ट टाइम में विजिट करछो ना ताले निश्चित भाव सब्सक्राइब करनियो थैंक यू ऑल हैव अ गुड डे